हेलो एवरीवन। ओके, आप लोगों का कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के सारे सजेशन को मैं आई विल ट्राई टू फॉलो दैट। ओके, बट इट विल टेक सम टाइम। ओके, बिकॉज इट्स नॉट easy for me to do all this thing randomly because I am not getting too much output as I was expecting. Okay, I had take this decision to take this episodes, but still I'm trying my best. Still I'm trying to bring, okay, this episode, this series will goes on, okay, until all the syllabus will be completed. And even after that, even I will not get too much response, even I will get somewhat response, I will try to bring, okay, another series where uh, I will plan something else. But all of you can trust me. Okay, the quality of this content is too much good. Okay, I had put so much of effort to bring this content. Okay, I had done so many things to bring this content. Okay, in less time you can do all the thing, okay, which is important for you, which is necessary for you to solve the questions. As I said, the intention for starting this series was that how I approach the questions when question comes in front of me, how I solve the questions. Okay, to tell all of you, to share all these things too with you, so that you can easily, okay, solve the questions. Okay, our end purpose is to understanding the questions. When question comes in front of us, either questions is from mains, advanced, or NEET. Okay, so you can do it. Okay, so you can do it when you know the concepts, when you know the basics, your basics is clear, then only you can do it. Otherwise, what we do, whole year we study, whole year we attend class, but and okay, we are not able to solve the questions. Okay, at the end we are not getting good marks in our test. Okay, so at the end, students started to get frustrated, goes to depressions, and then they think that yeah, they need more time, they need one more year. So on, and this cycle goes on. At the end they don't get, okay, good result as according to expectation. As on day one they started their plan, okay, the plan failed. Okay, but what happens, okay, in between or at the end of the, okay, session, they compromised with everything. Either they compromised with their dreams, okay, either they compromised with their results, or either they compromised with their plan. Okay, then at the end, what they justify, students and everyone, they justify themselves that yeah, all these things happens because of this and that. Okay, and in between, so many people use their emotions, okay, use their, okay, situations, okay, for their own benefit. Okay, so that's was the reason behind that, to bring this series for all of you, to know the reason, okay, to know the whole syllabus, okay, in minimum time, that how you can solve the question, any level of questions comes in front of you, how you can think the questions. Okay, so my purpose is only this, to, okay, tell you the way, tell you the approach. Okay, obviously I don't have too much of resources, I have a sort of resources. Okay, yeah, it's very difficult for me to do all this thing, but still I'm doing because I know, I trust my content. Okay, I trust my way, that whatever I'm doing, that is very very important, very very okay, helpful for solving the questions. Okay, so I already completed simple harmonic motions, I already completed a wave, and now I will start, as I promised to all of you, that is what, fluid mechanics. Okay, so first we will do complete fluid mechanics. Okay, then after completing fluid mechanics, then we'll goes to properties of materials. And once properties of material will complete, I will try to complete both the chapters today only. Once these chapters will complete, then I'll goes to heat. Okay, heat, then thermodynamics, and then we'll see, okay, remaining chapters. So soon our, okay, whole half of the portion, 50% of portion is going to complete. So it's a great achievement for all of us, for you, for me as well, because I had given target to complete this whole syllabus. Okay, so I had completed 50%. I'm going to complete 50% of the syllabus. Okay, so it's a big thing for me. Okay, I had put so much of time for this, to make this series, to create this content. I had put so much of efforts.
okay, I did so much of investment beyond all this thing, okay, whatever goes on, okay, going on. So definitely at least I have completed half of the, okay, our target, so it's a good thing for me, but still I have to complete half so that I will complete, okay, full syllabus, okay, full syllabus, okay, complete syllabus, okay, on the same way as going on, as goes on, and then afterwards I will plan something else, okay. Yeah, so thank you. So I'm starting, okay, now another chapter, that is fluid mechanics. So don't go on name, okay, in different, if you go for different books, okay, if you follow different books, so the name are different, so name of the chapters are given different, okay. So that's okay, that doesn't matter. Basically in this chapter we are studying the properties of fluid, okay. So what is fluid? Okay, if questions comes in front of you, what is fluid? What do you mean by fluid? Fluid जब अपन के सामने आता है, so what we means the fluids, okay. So what is the meaning of fluid? So basically, see, if fluid comes in front of us, so see, basically what we think, okay, that is movable, okay, yes or no, movable, okay. This thing comes in your brain, okay. So you can particles of the liquids are movable from one position to another position. Suppose you keep if you put the drops of water at one place, so it will easily be movable from one place to another place. One first thing, this comes in your brain, okay. Another thing comes in your brain is that what, okay, if you keep this fluid in any space, okay, any space, okay, any pot, the fluid will take the space of that pot, yes or no. So second things comes in your brain, okay, कि अपन को इसको किसी की स्पेस में रखेंगे, है ना, ग्लास में रखेंगे, ग्लास की तरह हो जाएगा, बॉटल में रखेंगे, बॉटल की तरह हो जाएगा, मींस इसका स्पेस क्या हो रहा है, इसका आई मीन क्या कहते हैं उसको, शेप, है ना, इनका शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, इनका जो शेप है वो क्या हो रहा है, दैट इज चेंजिंग, ओके, दिस थिंग। थर्ड थिंग, इफ आई विल आस्क यू कि क्या करते हैं, मान लो, ओके, यहाँ पे फ्लूइड है, फ्लूइड पर अगर अपन प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या फ्लूइड का साइज, उसका जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम हम चेंज कर सकते हैं, कैन वी चेंज द वॉल्यूम, कैन वी चेंज द वॉल्यूम। तो यहाँ पर अपन गैस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अपन को ऑलरेडी बात करना है। तो केटीसी में जो हम बात करते हैं गैस की, तो एक बात, गैस को क्या होता है कि आप उसी वॉल्यूम में 1 kg गैस भी डाल लो, उसी वॉल्यूम में 5 kg गैस भी डालो, तो आप जब 1 kg गैस डालते हो उस वॉल्यूम में, उस सिलेंडर में, तो क्या इसका मतलब क्या होता है कि 1 kg गैस किसी एक कोना में रहता है, कि वो 1 kg गैस पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ रहता है। आप 1 kg गैस भी पुट आउट करते हो उस वॉल्यूम में, सिलेंडर में, तो उस टाइम पर पूरा 1 kg गैस पूरे वॉल्यूम में रहता है। एट द सेम टाइम यू आर पुटिंग 2 kg ऑफ गैस इनसाइड दैट, ओके, वॉल्यूम। सो अगेन दिस 2 kg ऑफ गैस, ओके, विल स्प्रेड आउट थ्रू आउट द वॉल्यूम, यस और नो। सो व्हाट्स हैपनिंग, अब यहाँ पर अपन ऐसा लॉजिक दे सकते हैं कि 1 kg का गैस अपन ने डाला तो एक स्पेस पार्ट में था, 2 kg का गैस डाला तो ये ज्यादा स्पेस में गया, ऐसा कुछ नहीं था, है नहीं। आप कितना भी वेट डालो, कितना भी ओके अमाउंट डालो, वो पूरा वॉल्यूम में ही होगा, है राइट, ऑल ऑफ यू। सो ये बात समझ में, एक बात समझ में आता है, मान लो ये क्लासरूम, इस क्लासरूम में अपन ने क्या करा, 1 kg गैस छोड़ा, या भी 1 kg एयर मान लो इस वॉल्यूम में है ना। अब मान लो आंधी तूफान आई और गैस की एयर की अमाउंट बढ़ के 2 kg हो गई, 20 kg हो गई, तो वॉल्यूम तो उतना ही है, यस और नो। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट्स हैपनिंग हियर, यू कैन ऑब्जर्व द थिंग्स, व्हाट्स हैपनिंग, यहाँ पर क्या हो रहा है, गैस में क्या हो रहा है, गैस में क्या हो रहा है ना, गैस का पार्टिकल अपने आप जो स्पेस अवेलेबल होता है उसमें अपने आप को वो एडजस्ट कर लेता है। एक बात समझ में आता है, बात बराबर है, अरे बोलो बाबा, बात बराबर है, अच्छा ठीक है, ये बात बराबर है, समझ में आता है कि जो भी हमारा वॉल्यूम अवेलेबल होता है थ्रू आउट द स्पेस, ओके, द पार्टिकल्स ऑफ गैस स्प्रेड आउट, ओके, fills the space, okay. Next thing is what I am saying, yeah, next thing is what, कि ऐसा होता है कि गैस पार्टिकल में ऐसा होता है क्या कि पार्टिकल एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है कि नहीं, तुम आगे मत जाओ, क्या कोई लिमिट होता है क्या, नहीं, तुम अब आगे नहीं जाओगे, इतना सा आगे जाओगे, इतना सा आगे नहीं जाओगे, इज देयर इज एनी लिमिट इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, नथिंग लाइक दैट, एक चीज ये होता है। चलो अब अपन फिर से आते हैं फ्लूइड्स पर। फ्लूइड में क्या हो रहा है, हमारे पास एक तो शेप का तो चलो पंगा नहीं है, शेप अपन क्या करते हैं, कहीं पे किसी का भी शेप लो तो उसका तो कोई वो ही नहीं है कि अपन को जंक्शंस में लेना है कि नहीं, इफ आई विल टेक इफ आई पुट द वाटर ओके इन अनदर कंटेनर्स, दे विल नॉट टेक दैट शेप, दे विल नॉट चेंज देयर शेप, ओके। सो इट्स दिस इज द assumptions, ओके, यू हैव टू फॉलो दिस assumptions टू ड्राइव एनी रिलेशंस। सो ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो मतलब क्या कि हाँ, आप फ्लूइड को ओके या ओके लिक्विड को इफ यू पुट दिस इन एनी वॉल्यूम, इन एनी स्पेस, इन एनी क्या कहते हैं उसको, किसी भी चीज में रखो, है ना। सो क्या होगा, किसी भी बर्तन में रखो, किसी भी पॉट्स में रखो, है ना, तो देन व्हाट विल हैपन, दे विल टेक देयर शेप, यस और नो, राइट, ओके।
तो ये बात समझ में आता है कि वो उसका शेप ले लेगा, है ना। तो इस पे अपन को एजम्पशंस नहीं देना कि नो रे बाबा शेप न लेगा बाबा, है ना, नो शेप इट विल टेक द शेप, बात बराबर है, ठीक है, ये बात समझ में आते हैं। दूसरा चीज ये है कि यहाँ पर ये चीज समझना है कि ये दो टर्म्स होते हैं, एक होता है कंप्रेसिबल, एक होता है इनकम्प्रेसिबल, ओके, कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल, बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस टर्म्स कम्स टू द अदर पॉइंट्स, दैट इज रिजिड। if I say rigid, I already explained you in Newton's law of motion, so what is rigid? Rigid means that position, reference point of the particles is not changing, am I right? Is reference points of the body is not changing. If this point is this point of a solid body, so this position will not change, am I right? That was a rigid body, okay. So on the same way, what I am saying, what I am asking you, that if I am talking about what कंप्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेसिबल का मतलब ये होता है कि मान लो अपन के पास यहाँ पर फ्लूइड के पार्टिकल यहाँ पर भरे हुए हैं, यहाँ पर अपन के पास फ्लूइड के पार्टिकल भरे हुए हैं। So if you put some amount of pressure, so what will happen? The distance between particle will not change, okay, will change. So that is compressible. If it's changing, okay, it means what I am saying indirectly, fluid is behaving like gas, am I right? Indirectly I am saying the same this thing, okay, fluid is behaving like gas, okay. तो जब fluid गैस की तरह behave करेगा तो क्या होगा, इनके जो particles के space होंगे वो कम हो जाएंगे, जब हम दबाएंगे तो दब जाएंगे। अच्छा, एक बात होता है, एक सिचुएशन ये हो गया अपने पास। दूसरा सीन अपन क्या लेते हैं कि अपन के पास वी हैव फ्लूइड्स, ओके, इन कंटेनर। अब इसमें क्या करते हैं, अब इसको दबा रहे हैं अपन, ये फ्लूइड ऐसा तो दिखाएंगे अपन को, ऐसे दिखाना है फ्लूइड को ना, है ना, ठीक है। सो इफ आई पुट फ्लूइड इन दिस कंटेनर, इफ आई एम पुटिंग सम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ प्रेशर, इफ आई एम पुटिंग सम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ प्रेशर, सो व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट आई एम आस्किंग कि ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, okay, it's not, okay, this volume of fluid is not changing there, okay, position, respective position, relative position, what does it mean? Means इसका मतलब ये हुआ कि इसको अपन कंप्रेस करने पे इसका वॉल्यूम चेंज ना हो रहा है बाबा, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, समझ में आता है, बताओ, समझ में आता है, मतलब इनका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर इनका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो इनकम्प्रेसिबल, दिस फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, दिस वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इज चेंजिंग, ओके, ऑन पुटिंग सम अमाउंट ऑफ pressure, force, thrust, whatever you put it out, okay. So this is compressible, this incompressible, right? So here what's happening, if you are putting some amount of force and delta V change in volume of the fluid, the same amount of fluid is 0. So this is the condition, delta V is equals to 0, delta V, what I am saying, delta V not equal to 0, this is compressible, okay, means we are talking about compressible first, okay, here suppose, so this is what compressible, am I right? So ये अपन का क्या होगा, कंप्रेशन कंप्रेस हो गया ना, सिंपल से लॉजिक लगा ना, and in the way of putting some amount of force, pressure, force, whatever we are putting over here, thrust, and the volume of the fluid is changing, means what, delta V is not changing, here not changing, here not changing, am I right? So this is not changing, so what, not changing means what, delta V is what, delta V is what, not changing means delta V is what, 0, am I right? So if delta V is 0, this means what, this is compressible, this is incompressible fluid, am I right? Incompressible fluid. What if I say कि ideal fluid is incompressible fluid, I am not going to justify it, I am not going to explain it, okay, आपको खुद से सोचना है, मैं भी सोच रहा हूँ तब तक, but I am giving passing this statement, if I write over here that ideal fluid is incompressible fluid, ideal fluid is incompressible fluid। अच्छा, तो इसका मतलब क्या, आप बोलोगे अरे सर इसका मतलब ये हुआ कि आप इनडायरेक्टली तो यही बोल रहे हो कि जितने फ्लूइड सारे कंप्रेसिबल है ना, क्योंकि सब फ्लूइड आइडियल थोड़ा होते हैं, आइडियल चीजें एग्जिस्ट तो करती ही नहीं ना सर, ओके। सो आई विल नॉट से एनीथिंग ऑन इट, ओके। सो मैंने पूरा बेसिक जो भी चीज होता है मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया आपको, है ना। अब इसके बाद आप पूरा चैप्टर का कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, am I right, all of you, okay. So after this, okay, you can understand whole chapters very easily. So I think this is enough, okay, for this part, okay. So in next part I will take only 2 parts to complete this chapter. See, next part I will complete the whole chapters, then after that I will start new chapters, okay. So I hope all of you understood what I said to all of you. It's very useful. Please note on all points are very important. What point I am saying, that is the point only exist, okay. You read any books, you will go through anything, okay. So what I say, okay, so what I say, okay, that